Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of fluid mechanics 2. In the last classes we discussed the theoretical part of chapter number 9, in which we discussed lift and drags and boundary layers. So this is the last video lecture of chapter number 9. In this lecture we will be discussing some numericals regarding the topics which we have covered so far. This lecture will be covering some numerical which will give you some basic concept about the drag and lift. So let's start. The first numerical is 9.29. This is the numbering I'm following in this last slides are from the solution of the solution of the book Munson, which is provided to you. So let's read out the question. The two flat plates shown in the figure are to have the same drag. दो प्लेट्स हैं आपके पास. एक्चुअली दोनों प्लेट जो है वो सेम है, मतलब उनके सिर्फ ओरिएंटेशन में मसला, ओरिएंटेशन जो है वो बदली हुई है. और उन दोनों का जो पहली कंडीशन क्या है कि उन दोनों का जो ड्रैग है उसके ऊपर वो सेम है. So we have velocity UA and we have velocity UB. UA is approaching the first plate, which is A, and UB is approaching the second plate, which is UB. The length is basically L, and the larger length of this rectangle is NL. So when you tilt it, this NL will be along direction, and when this is facing up front, this is the length is small l. So the determine the up. So the question is, R have the same drag. Determine the upstream velocity UB in terms of UA and N. Assume laminar flow. Explain your answer physically. So सबसे पहली बात जो हमारी जो कंडीशन है कि हमारे पास दोनों का ड्रैग बराबर है. ड्रैग बराबर है DA बराबर है DB के, विच इज इक्वल टू हाफ रो यू स्क्वायर ए सी डी है. सी डी क्या होता है? सी डी आपके पास ड्रैग कोफिशिएंट होता है, और हाफ रो जो है डेंसिटी है, यू वेलोसिटी है, और ए जो है वो एरिया है इस प्लेट का. सो यहाँ पे सिंस दिस इज़ अ प्लेट, तो हम इसका प्लेन फॉर्म एरिया लेंगे क्योंकि जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो ए है, दोनों केसेस में जो एरिया है पहले केस में और दूसरे केस में, वो दोनों का केसेस में दोनों का एरिया जो है वो बराबर होगा. तो आपके पास ए बराबर है ए बी के, विच इज एन एल इन टाइम्स एल, एन एल टाइम्स एल, विच इज द प्लेन फॉर्म एरिया. तो अगर आप गौर करें, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट इज वेरी स्मॉल, एंड इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस इन द लेक्चर्स दैट जब आपके पास एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसकी थिकनेस को इंक्लूड नहीं करते फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया. वी यूजुअली टेक द प्लेन फॉर्म एरिया. सो इन दिस केस in these two cases of A and B, the plane form area can be calculated by multiplying NL times L. अच्छा, ओके, आगे जब बढ़ते हैं, वी नो दैट द सी डी द ड्रैग कोफिशिएंट ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज दिस इज अ फ्लैट प्लेट इज 1.328 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर. So this relation is coming from the book. If you can check in the respective a part of the book to get this value. This is for the laminar flow drag coefficient. So drag coefficient की value क्या है? 1.328 upon Reynolds number. और for both cases the drag coefficient will be different because the Reynolds number की value है वो इस केस के लिए different होगी और इस केस के लिए different होगी. This is the critical part. So I will explain you why. So CD बराबर है इस पहले केस में 1.32 upon Reynolds number for the part A represented by A, and CDB equals to 1.328 upon REB. Now अगर आप इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, बिकॉज हाफ से हाफ 1/2 रो and area will be cancelled from both sides because areas are similar, velocities you need to find them, and the densities of both these two flows are similar. So हमारे पास बचता सिर्फ ये है, हमारे पास UA CD है, UB CDP, where CDA equals to under root REA Reynolds number for the first case and UB upon Reynolds number for the second case. इसमें 1.328 भी cancel हो गया from both side. Now we know that Reynolds number बराबर होता है UA upon UAL upon nu. और फॉर द फर्स्ट केस, बिकॉज अगर आप गौर कीजिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इस केस में जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है प्लेट की वो एल होगी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऐसे है. तो द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज ओनली एल, बट इन दिस केस द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विल बी एन एल बिकॉज प्लेट जो है उसकी ओरिएंटेशन बदल गई. सो आपके पास जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो एक दफ़ा एल है और एक दफ़ा एन एल है. तो व्हेन यू रिप्लेस दी रेनॉल्ड्स नंबर इन दिस रिलेशन, यू विल गेट दिस रिलेशन which is UA square upon the Reynolds number and UB square upon the Reynolds number for NL case. By solving this relation,
आपके पास एल से एल कैंसिल हो गया, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो यू विल बी लेफ्ट विद यू ए, यू बी एंड एन. सो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ यू सिंप्लीफाई इट बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन द बोथ साइड, यू विल बी हैविंग यू बी इक्वल्स टू एन एंड क्यूब रूट ऑफ एन टाइम्स यू है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास केस बी है, विच मीन्स कि अगर आपके पास केस बी है और अगर आपको केस ये वेलोसिटी यू बी, देखो अगर नॉर्मली अगर आप देखा जाता है फॉर सेम वेलोसिटी व्हाट वुड हैपन, द ड्रैग विल बी ग्रेटर ऑन दिस वन. सो आपको अगर ड्रैग को कांस्टेंट रखना है तो यू नीड टू हैव the velocity variation will be like this, right? तो the ub will be greater than ua in case of a constant drag. आपके पास अगर ड्रैग बराबर, अगर ड्रैग आप जो है बराबर लेने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों का ड्रैग बराबर है तो आपके पास यूपी की वैल्यू जो है यूए से बड़ी होनी चाहिए. So this is a physical explanation of this problem. So moving on to the next problem. आपके एक अगला सवाल देख लेते हैं. If the drag on one side of a flat plate parallel to the upstream flow is d, when the upstream velocity is u, what will be the drag, what will be the drag be when the upstream velocity is twice of the stream velocity u to u and half u upon 2, assume laminar flow. So again this is another interesting question to look into the variation of the drag with respect to velocity. आपके पास सी डी है, सी डी की वैल्यू जो है 1.328 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर होती है. तो लेमिनार फ्लो के लिए आपके पास जो ड्रैग की वैल्यू है वो हाफ रो यू स्क्वायर सी डी एफ टाइम्स एरिया हो गया, वेयर सी डी एफ बराबर है 1.328 अपॉन यू एल इंटू न्यू. सो अगर आपके पास अगर सिंपल रेगुलर वेलोसिटी है, सिंपल यू वेलोसिटी है, तो आपके पास आप इसको उठा के सी डी के जगह रिप्लेस कर दें तो यू विल बी हैविंग 1/2 रो यू स्क्वायर. ये टर्म कहाँ से आई? दिस इज द सी डी टर्म which is coming from this, and this part is basically from the Reynolds number. Area is basically area, so when you simplify it you get this relation which is 0.664 rho a times the u 3.2. अब important बात ये कि अगर this is the case of drag when you have velocity u. Now when you have velocity drag, when you have a drag with velocity u and now you have a drag which is velocity which is twice the velocity, so what would happen if you have because यहाँ पे क्या हो रहा है, आप और कीजिएगा u की वैल्यू है u raised to the power 3.2, but in case of twice of the velocity this is 2u raised to the power 3.2, right? So ये relation जो है वो basic relation है for a velocity which is u, as simple as that, right? तो मगर अगर आप velocity को डबल कर रहे हैं तो आप velocity को डबल कर रहे हैं और drag जो है for the 2u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u upon 2u 3.2, right? So अगर आप लोग simplify करें, u से u कैंसिल कर सकते हैं आप, and you will be left with 2, and just you can simply move velocity dtu to the right hand side. So you can say that the drag in the case of double velocity is not double, but it is even more than that. So it is increasing with a factor of 3.83, almost 3, right? So आपके पास अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड दैट, अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर मेरे पास वेलोसिटी u है और ड्रैग d है, तो what would be the drag if the velocity is double? So usually intuition कहती है कि drag भी double हो जाएगा, but this is not the case because from the equation it is coming out to be that the drag would be greater than double of the drag when your velocity is u. Now similarly अगर आप उसी velocity को half कर देते हैं तो the half u upon 2, and when you simplify it you are getting it 0.354. And this is another interesting observation that when the velocity is half, the drag is not half, it is even lesser than the the regular value. So double करने से वो double से बढ़ रहा है and half करने से वो half से कम हो रहा है. So usually what happens, आप जो है वो simply out of your intuition नहीं करते, बल्कि you need to do some maths and come up with the answer which is numerically substantiating the claim. Okay, moving further. Okay, now this is an interesting numerical. A 38.1 millimeter diameter 0.0249 न्यूटन टेबल टेनिस बॉल. सो पहली जो टर्म लिखी है वो आपके पास डायमीटर है बॉल का, टेबल टेनिस बॉल का, जिसका वेट जो है वो 0.245 है. बॉल का वेट है
इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल। आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें पानी है और उसमें आपने बॉटम से उस बॉल को रिलीज किया, तो व्हाट वुड हैपन ड्यू टू द बॉल में, बॉल जो है वो लाइटर देन द वाटर है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। विद व्हाट वेलोसिटी डज इट राइज टू द सरफेस। वो जब ऊपर पहुंचेगी अपने सरफेस पर तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो अस्यूम इट एज रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो अज्यूम हम ही कर लेते हैं कि जब जब वो पहुंचेगी सरफेस के ऊपर तो वेलोसिटी उसकी टर्मिनल होगी। तो नाउ सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अगर ये आपके पास बॉल है तो इसका जो ड्रैग है वो उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है बिकॉज बॉल इज मूविंग अपवर्ड। योर एफ बी इज द बॉयंट फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है, पानी जो है पानी उसको ऊपर धकेल रहा है। डब्ल्यू इज बेसिकली द वेट ऑफ द बॉल एंड यू जो है वेलोसिटी है जिससे वो मूव करी है। आइदर यू कैन which is because that is causing the drag because पानी जो है वो स्टिल है, that's why the u जो है हमने उसको into the ball ले लिया, right? So this u is not don't confuse u with the, because u will be equals to the velocity of the ball and or vice versa. So this u is basically causing the drag, half rho u square times area, and fv is the buoyant force, w is the weight, and drag is acting downwards because वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ड्रैग इसका जो डायमीटर है वो 38.1 mm है। वाटर है इसकी, द फ्लूइड इज वाटर, जिसकी आपने न्यू और रो जो है वो फ्रॉम टेबल या जो भी चार्ट है वहाँ से निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप कौन कौन सी फोर्स ऐड करनी है। आपके पास जो बॉइंट फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है वो बराबर किसके, वेट के और ड्रैग के, बिकॉज ड्रैग एंड वेट आर ड्रैगिंग इट डाउनवर्ड्स वेयर एज बॉइंट फोर्स इज कीपिंग इट इज मूविंग इट अपवर्ड, राइट? तो वेट आपके पास 0.0245 न्यूटन गिवन है, सॉरी। बॉइंट फोर्स क्या होती है? बॉइंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बराबर होती है आपके पास जितना वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, और विच इज द वॉल्यूम v times the specific gravity of the water. So specific gravity of the water times v. So यहाँ पे volume of the ball क्या होगा जो कि sphere है, that is 4 pi upon 3 d upon 2 is basically r, so r cube, so 4.4 pi 3 upon r cube. So this term is basically the volume of the the sphere, या आप ball कह लें, times the specific gravity which is the weight per unit volume of the water, right? So अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो you will get that the buoyant force is gamma 4 pi upon 3 d upon 2 cube is equals to weight plus cd. This is the drag force, cd times half rho u square. Now let's see the area because the ball is moving upwards, और आप गौर से देखें तो if you see from the top you will see the ball as a circle. तो यहाँ पे जो 5/4 डी स्क्वायर है ये इसका सर्कुलर जो सर्कुलर फेस है उसका एरिया है। तो ये आपके पास ड्रैग फोर्स हो गई, ये आपके पास वेट है और ये आपके पास पॉइंट फोर्स है। गैमा की वैल्यू 9.8 एक्सपोनेंशियल 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब है। 4 पाई अपॉन 3 डायमीटर इज 0.381 डिवाइड बाई 2 की पावर ऐसे पावर 3 इज इक्वल टू दिस इज अ वेट 0.0245 and plus this term is the drag force which is half cd times the density of the water which is approximately 1999. Then you have u which is unknown, and then you have the area of the front leg of the ball which is pi upon 4 d cube. Now जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं because you have everything unknown except cd and u, so you are coming with up with this relation which is cd u square equals to 0.455, right? So in this equation we have two variables, we do not know cd and we do not know the u, right? So now let's see how to solve this relation. Sorry. So now you have let's say let's take another relation which is Reynolds number. Reynolds number is basically is u d upon nu. U is unknown, d you know that the d is the diameter of the ball which is the characteristic length, and nu is the water's viscosity 1.12 exponential minus 6. Now if you see that in this relation we have Reynolds number unknown and we have u unknown, so we have two equation and three unknowns. We have cd, u and re, so we have two equation and three unknown. So this is a classical example of an indeterminate system where you have more variables than the equation. So what we can do, we need to do some trial and error, right? So if you remember we discussed this graph which is the graph for different bodies, sphere and
cylinder. If you remember, this is the figure number 9.21 in your textbook. So this the graph is basically plotted against CD and R. When you change the Reynolds number, your CD changes, and in the lemon, this is the laminar region. Then you have a transition region, and then you have a turbulent region. So there were two graphs, one for the sphere and one for a smooth cylinder. So this graph is basically a uh, for the sphere, right? So what we can do, we can use an method which is called trial and error. We assume a CD value obtains u, because हमने इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से में हमने एक CD को अज्यूम कर लिया. अज्यूम करेंगे हम CD की वैल्यू को, लेट्स से, और उससे हम u निकालेंगे. u के बाद हम u को यहाँ रिप्लेस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर में, और फिर रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, और फिर रेनॉल्ड्स नंबर को इस चार्ट से चेक करेंगे कि वो CD की वैल्यू कहाँ दे रहा है. अगर आपकी अज्यूम वैल्यू और आपकी जो चार्ट से निकली हुई वैल्यू बराबर है, तो विच मीन्स कि आपकी जो पहली अजम्पशन थी वो सही है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसी वैल्यू को दोबारा पुट कर देंगे इस CD के अंदर एंड कम अप विद अ न्यू U to find the Reynolds number and then do the procedure again. This is called hit and trial. So let's see how it goes. For example, हम पहला स्टेप ये कि हमने अज्यूम कर लिया CD की वैल्यू 0.5. So 0.5 को जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, तो you come up with the velocity which is 0.954, right? And from 954 you come up with the Reynolds number which is 3.24 exponential 4. इसको यूज करते हुए, और फिर रेनॉल्ड्स नंबर को जब आपने इस ग्राफ से चेक किया अक्रॉस दिस टेबल, दिस चार्ट, दिस फिगर, तो आपके पास CD की वैल्यू आई 0.4. तो आपकी अज्यूम वैल्यू 0.5 थी, जबकि CD निकल के आ रहा है 0.4, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 0.5. नाउ this is the first iteration, right? So now you take CD as your input value. CD 0.4. अब आपने assume कर ली 0.4 CD की वैल्यू, आपने यहाँ पुट की दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में. then you will come up with a new velocity which is 1.06. then you solve for Reynolds number by using equation number 2. then you check from the graph that's at this Reynolds number which is 3.62 exponential 4, what would be the value of CD. So that CD is coming out to be 0.4, and this CD 0.4 is actually equals to the assumed value at the second step, which means that the velocity coming from this value is actually correct. This method is called trial and error method. And अब इसमें सवाल बनता है कि सर सवाल ये होता है कि हमें कैसे मालूम होगा कि CD की वैल्यू 0.5 ही है, तो या why not 0.6, why not 0.3. सो एक्चुअली आप ट्रायल एंड एरर की मदद से आप यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर आप इसको 0.3 लेते या 0.7 लेते, तो आपके पास जो अगला आंसर आता है वो 7 से, बिकॉज देखो जो सही आंसर वो 0.4 है, तो व्हाट वुड हैपन अगर आप 0.7 लेते तो आपका आंसर 0.7 से कम आता, आपके जो वैल्यू है CD की, बिकॉज द आंसर इज अप्रोचिंग टू द करेक्ट आंसर. अच्छा, वो फिर आप कहते हैं कि 0.7 जो है वो 0.65 के बराबर नहीं है, तो आप 0.65 लेते अगेन स्टेप नंबर 2 में, तो योर आंसर would not be equal to 0.65. तो आपका आंसर 0.6 आता. तो आप ये ट्रेंड देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. फिर आपने 0.66 एंटर किया तो आपका आंसर आया लेट्स से 0.58. अब 0.58 जो है वो फिर सही नहीं आएगा आंसर, फिर आप 0.5 पर आ गए. तो व्हाट हैपेंस, दिस इज एक्चुअली यूजुअली दीज टाइप्स ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर applied in numerical calculations. and हम कंप्यूटर्स को या प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. सो आप क्या करते हैं, आप एक कैलकुलेटेड गैस करते हैं, और फिर उस कैलकुलेटेड गैस का जो रिजल्ट होता है उसको चेक करते हैं अपने पिछले आंसर से. अगर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो आप उसको रिस्पेक्टिवली उसको बढ़ाते रहते हैं. सो दिस मेथड शुड बी हैविंग एन आइडिया अबाउट दिस मेथड. तो यहाँ पे जो u की वैल्यू 1.06 है, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. और these type of numericals are usually very common in fluid mechanics. Actually, these problems are very common in fluid mechanics when you have multiple unknown variables and you have lesser number of equations, right? So moving further, let's see this numerical. This is a very good practical example. As shown in the figure, the aerodynamic truck. We have two trucks. We have truck which has a air deflector installed on the top of the compartment. Is reduced by the use of appropriate air deflector. The reduction in drag coefficient CD
0.96 to 0.7. So what happens, we have two trucks without the deflector and with the deflector. Though without the deflector, the coefficient of drag is 0.96, which is quite high, and without the deflector it reduces to 0.7. So what happens correspond to reduction of the how much reduction, how horsepower, कितनी पावर जो है उसमें रिडक्शन आई है, एंड दैट विल, एंड अगर आपके पास 65 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है तो आपके पास कितने पावर रिडक्शन हो रही है अगर आपके पास रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ हायर, व्हेन यू हैव अ पावर saving, that would definitely account to the fuel saving. That's a pretty simple numerical, but this is really important as far as the practicality of these relations are concerned. So we know that the power is basically force time velocity, right? So force in this case is the drag force which is being experienced by these trucks. So drag times velocity. Now drag is basically equals to half rho u squared CDA, right? So the power reduction is PB. In the first case, you will be having higher power, and PA will be having lesser power. So half rho u cube, because you have another extra u in this relation, times A. Now you have, because area, everything is constant, the frontal area, because this is 12, so we have CDB minus CDA. The only difference created in these two problems, these two cases, are the drag coefficient. So for the case of B, we have CDB, which is 0.96, and CDA, which is 0.7. Area is same, U is same, and so U is at like 65 miles per hour, which we can convert into feet per second. So when you put everything into the relation, this is for the slugs per feet cube is the imperial unit of density. This is the feet per second. The velocity 10 जो है आपके पास इसके अंदर width है इस ट्रक की, एंड 12 जो है वो उसकी हाइट है. सो आपके पास जो फ्रंट एरिया है वो 12 टाइम्स 10 हो गया, और 0.96 माइनस 0.7. सो व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग a value which is 32,100 feet pound per second. This is the unit of power. इफ यू कैन सी दैट फिट पाउंड जो है वो वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, डिवाइड बाय साइन. सेकंड इज विल गिव यू द पावर, एंड बाय डिवाइडिंग इट विद 550 you are converting this power into horsepower. Usually what have usually in car vehicles and we denote the power of these cars and automobile in terms of horsepower. So these conversion factors are really crucial as far as the mechanical engineering is concerned. You should know these conversion factor, and you should be these, although you can actually convert them by using, you do not need to learn them or remember them by heart. So this actually gives you very interesting idea that even just by installing a small deflector, आप 50 बहुत ज़्यादा energy power को save कर सकते हैं. that is the save 58.4 horsepower save कर सकते हैं, and that this much of power will basically translate to the reduction of the fuel. तो आपकी fuel consumption कम हो रही है, and that's by just simply installing a deflector. अब आगे चलते हैं. Let's say we have another problem, which is problem number 106. The wings of an old aeroplane are often strengthened by the use of wires that provided cross bracing as shown in the figure. आपके पास पुराने जहाज़ों में आपके पास usually these wires are basically installed to support the wings. If the drag coefficient of the wings was 0.02, CD given है आपके पास based on the planeform area, determine the ratio of the drag from the wire bracing to that of the wing. आपका जो ड्रैग है वायर टू विंग वो कितना है. सो देखते हैं. स्पीड जो है वो 70 माइल्स पर आवर है फॉर बोथ वायर्स एंड विंग. विंग एरिया 148 है. वायर की लेंथ जो है वो टोटल लेंथ 160 है, और डायमीटर जो है 0.05 इंचेस है. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. वी हैव ड्रैग ऑफ द विंग which is half rho u square CD wing and area of wing, and we have drag of the wire which is half rho u square CD wire and A wire, right? When you take the ratio of these two terms, what happens, the CD wire area wire and CD wing area wire, so area of the wing आपके पास given है, and area of CD of the wing is also provided in the question. So as far as the area of the wire is concerned, that's pretty simple, because these are when you are approaching them head on. So what you are actually seeing a cylinder, or
you are actually approaching a cylinder, because wires are cylinders, but the frontal area would appears to you as a rectangle. तो आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, आपके पास 150 60 है, 60 feet, and the diameter of the wire will appear as the second length of the rectangle. So your area will be 160 times 0.05, which is a diameter, divided by 12. We can convert into feet to 0.667 feet square, right? So now let's check. So now the another thing is missing, which is the CD of the wire, right? So for that we need to find the Reynolds number. Reynolds number basically, u is all u is of the plane is 70 miles per hour. That will be equal, same for the wire as well. Diameter जो है वो characteristic length होगी जो of the wire, which is 0.05 inches, and the nu is for the air viscosity is coming out to be 2720. So now from figure 9.221, that is the same figure जो मैंने ऊपर वाले ग्राफ में प्रॉब्लम में शो की थी. Now you have to now here you have a cylinder, smooth cylinder at the Reynolds number 2720. You can simply draw a line which is parallel to the y-axis and cutting the respective curve of intersecting the respective curve of the cylinder, and then drawing it along the x-axis, parallel to the x-axis, to get the value of CD. So let me just show you which figure I'm talking about. This figure, right? This is 9.21, right? This figure, if you see, when you have Reynolds number, you lock the Reynolds number here, you go up, you cross the respective line either for cylinder or sphere, and then you draw a line which is parallel to the x-axis to get the CD value. So exactly similar thing is happening here. So your CD and yeah, definitely, because since you are actually doing it manual, so there will be some errors. So don't worry about that, because those errors are not as important, because the margin, the scale of the errors are not high. So CD coming out to be 1. So when you replace everything, you are getting that the drag of the wire and wing is 0. Definitely wing is larger, because having a higher, much more area, but the drag is less. The ratio of these two is 22.5%, which means that the wires are लेसर. द ड्रैग जो है वो वायर के ऊपर इतना कम है, या विंग पे इतना 78 टाइम ज़्यादा है वायर के मुकाबले में. Moving further, we have let's say another very good interesting example to see a light aircraft with a wing area of 200 feet square. एक हल्का सा जहाज है आपके पास, इसका जो एरिया है वो 200 फीट स्क्वायर है, एंड अ वेट ऑफ 2000 पाउंड, हैज़ अ लिफ्ट कोफिशिएंट ऑफ 0.4. उसका लिफ्ट कोफिशिएंट CL गिवन है, एंड अ ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ 0.05. डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लेवल फ्लाइट. आपको पावर निकालना है अगर आप मेंटेन कर रहे हैं लेवल फ्लाइट को. सो तो फॉर द इक्विलिब्रियम, जो लिफ्ट है वो बराबर होगी आपके वेट के, बिकॉज तभी तो वो पावर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. तो लिफ्ट बराबर होती है CL इन टाइम्स 1/2 हाफ रो यू स्क्वायर ए, जस्ट लाइक द ड्रैग. So will your the weight is 2000 pounds is equals to 0.4 the CL half, and this is density, and the velocity is unknown, and then 200. So from here we found that velocity should be 145 feet per second. We know that the power is drag times velocity. So and the drag is CD times half rho u square a. So you have drag, you have everything, so you can simply find the drag from drag here, right? So आपके पास drag की वैल्यू क्या आई, 250 pounds आ गई. This value of drag would be obtained from हमारे पास W upon D, which is the lift upon drag, L upon D, CL upon CD. आप यहाँ से निकाल सकते हैं, and because this is coming out to be 8, and then when you divide it with the 2000, you are coming with 250 pound as well. So you have two different methods, either by using the CL upon CD, either by using the knowledge that the ratio of CL upon CD, which is a lift coefficient to drag coefficient, is equals to lift upon drag, or and lift and weight are equals, right? So this is coming out to be 8, and you can actually divide you can find the drag by using this knowledge of the ratios, or knowledge that the ratios of the CL upon CD equals to lift upon drag, sorry. So now if we now you have drag and power is simply
drag times u, which is 250 pounds, times the velocity, which is 145, coming from the first relation, that's 65.9 horsepower, right? So this is a very simple numerical, but you should know how to have these simple calculation of lift and drag. These are very crucial, right? Moving further, this is another very interesting example. A wing generates a lift L when moving through sea level air with a velocity of u, right? So आपके पास what happen when you have sea level जो है वो उस पर अगर velocity u है और lift जो है वो L है, how fast must the wing move through the air at an altitude of 35,000 feet with the same lift coefficient if it is to generate the same rate. वो अगर आपके पास जो lift coefficient है जहाज का वो सेम है और आपके पास अगर उसी जहाज को 35,000 फीट के ऊपर फ्लाई करना है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. So for that matter your lift should be lift sorry lift should be similar same, right? तो half rho is u square, I was half and cl से cl cancel हो गया because that are the constant terms, a cancel, l बराबर cl cancel और a cancel हो गया. So you are having u and rho, right? So u is the velocity at the sea level is provided to you, which is no, it's not provided to you, right? So yeah, the answer will be in the velocity terms, right? So what happens, the only thing which is the crucial part is the density of the air, right? So density of the air at the sea level and density at the 34,000 feet is way different. There's a difference of like almost 10 times, right? So जो आपके पास डेंसिटी कम हो रही है उसकी वजह से जो आपके पास the velocity of the plane should be 1.8 times higher than the velocity of the plane at the sea level, right? अगर आपका CL सेम है मतलब lift coefficient सेम है और आपके पास area similar है and you have to maintain the same lift, so you need to fly your aeroplane 1.8 times faster than the speed on which your plane is flying at the sea level. So because the density is low, so you need more velocity to maintain the lift, right? Moving further, now this is another very interesting, a very simple numerical, but it will give you another perspective of lift and drag. We have show that for an unpowered flight में बात पर इंजन बंद हो गए, for which the lift and drag and weight forces are in equilibrium, the glide slope angle, which is the angle with which the aeroplane is approaching or the velocity is approaching the aeroplane, is given by tan theta equals to cd upon cl. So this is really important. Now let's see this figure. We have an aeroplane, we have an angle which is at angle of attack and that is theta. So आप गौर करें तो आपके पास एक फोर्स जो है वो इस जहाज के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड डी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, राइट, और द मोशन. और आप एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर है ड्रैग टाइम्स अभी जो वाहिद फोर्स है इस जहाज के ऊपर वो उसका वेट है, राइट? तो जो ड्रैग उस पर एक्ट कर रहा है वो बराबर किसके होगा, डब्ल्यू साइन थीटा. डब्ल्यू अगर आप कैन से तो डब्ल्यू और थीटा अगर ये है तो sin theta will be this line which is along D, and for the lift the other coefficient which would be W cos theta. So when you have the ratio of these two, drag upon lift, you will have W sin theta and W cos theta as coming out to be tan theta, and the drag is itself क्या होता है, half rho u square ACD and half rho u square ACL. So cancelling all terms you are left with CD upon CL and tan theta equals to CD upon L. So this is a very important relation when you have having a slope angle, glide slope angle, and the tangent theta is equals to the CD upon CL. So keep this in mind and we will see another problem which is 9.95. Now by using this relation, let's see what we can find, how this relation can be so useful. Let's say if the lift coefficient of a Boeing 777 aircraft is 15 times greater. This is really important because your lift coefficient should be greater than your drag coefficient. If you remember, we discussed this fact in the previous video lecture. The lift coefficient is 15 times greater than drag coefficient. Can it glide from an altitude of 30,000 feet? अगर वो
to an airport which is 80 miles away if it loses power from its engine. So what happens, अगर ना जहाज की हाइट जो है वो 30,000 फीट पर है और जो एक एयरपोर्ट है वो तकरीबन 80 माइल्स दूर है उस पॉइंट से जहाँ पे उसकी हाइट 30,000 फीट है और इंजन फेल हो जाते हैं, तो क्या वो ग्लाइड करता हुआ एयरपोर्ट तक आ जाएगा, ये हमें चेक करना है। 80 माइल्स दूर है एयरपोर्ट, उसकी हाइट 30,000 फीट है और आपके पास जो लिफ्ट कोफिशिएंट है जहाज का वो द लिफ्ट कोफिशिएंट इज 15 टाइम्स दैट ऑफ अ ड्रैग कोफिशिएंट। मतलब ये है कि जो अगर वो एक मीटर नीचे आता है जहाज तो वो 15 मीटर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लिफ्ट द ड्रैग, द रेशियो ऑफ द लिफ्ट एंड ड्रैग। सो नाउ हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी एल, ये हमने यहाँ से निकाला था पिछले रिलेशन से। सी डी जो है वो आपके पास 1 है तो सी एल क्या होगा 15, बिकॉज द लिफ्ट कोफिशिएंट इज 15 टाइम्स ग्रेटर देन द ड्रैग कोफिशिएंट। सो योर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। सो फ्रॉम दिस फिगर अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा वही है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था फ्रॉम दिस फिगर। सो थीटा विच इज़ एन स्लोप एंगल, ग्लाइड स्लोप एंगल, अगर आप यहाँ से थीटा निकालते हैं टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं तो यू विल सी दैट 30,000 डिवाइड बाय द डी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द एरोप्लेन इज एट 30,000 फीट एंड द एयरपोर्ट। 30,000 feet divided by d distance is equals to 1 upon 15, right? 1 upon 15 is basically the ratio of cd upon cl, and cl is given to you in the question. So when you solve this, you find that the distance of this triangle, which is basically 4.5 exponential 5 feet, converting it into the miles, which is 85.2 miles, which means that even if the engines are lost and the airplane is at 30,000 feet and it is 80 kilometers away, 80 miles away from the airport, from the data or from the very simple calculation, if you know this lift coefficient and if you lift coefficient, you found out that this airplane can safely land and glide to the airport, because इस ratio के साथ, like although it is a very simple calculation, there are lots of things which are not taken into account, like let's say the the wind speeds and other thing. So आपके पास 80 माइल्स जो है वो आराम से ग्लाइड कर जाएगा और उसके जो और क्योंकि जो उसका जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम विद द डाटा इज बेसिकली 85.2 माइल्स, तो इट इज़ वेरी सेफ इवन फॉर एग्जांपल अगर गैर मामूली ऐसे हादसा हो जाते हैं जहाँ पे आपके पास इंजन फेल हो रहा है और आपके पास हाइट जो है वो अच्छी खासी है, तो यू एक्चुअली कैन वेरी इजीली ग्लाइड to the airport by, even because your CL is quite high as compared to drag, बिकॉज अगर सील जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है आपके पास आपके लिए उस जहाज़ को इवन विदाउट हैविंग इंजन, सही है, अगर पावर भी नहीं मिल रही और आप वो ग्लाइड कर रहा है। सो दिस इज इट, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल of the chapter number 9, and this is the end of chapter number 9, and in the next video we will start the next chapter, which is turbo machinery. I hope you are clear with the numerical. If you have any question, please ask me in the Zoom sessions.